So again class, very important and full of concepts class. We are dealing with the charged spherical conductors, charged spherical shells, charged spherical solid conductor with the cavity. So today's case is when two charged spherical conductors are connected with a wire, then how to think and solve that problem. So I am taking a question from 2011 JEE, and the question was a spherical metal shell A of radius RA and a solid metal sphere B of radius RB, where RB is less than RA, are kept far apart and both are given charge Q. Then they are connected by a thin metal wire. You have to analyze all four things. After connection, what will be their final charge? What will be electric field at the surface? What will be surface charge density? Surface charge density is new phenomena in today's class, and let me explain you that surface charge density is, you note it down, surface charge density is equal to, if it is on the surface only, not on the volume, on the surface only, then it is called surface charge density. If the charge is distributed over a volume, then it is called volume charge density. So surface charge density will be the charge distributed upon the surface area of the sphere. So surface area of the sphere will be 4 pi and the radius square. Right? So let me start the question. Here are the two conductors. One is shell and other is solid conductor according to the question. Both are having charge Q. Radius of solid conductor is RB and radius of shell is RA, and they are joined by the metal wire. RB is less than RA, right? This is smaller one. And then let me start with the first question, that is what will be the final charge. Now look at the situation here. Initially when they are not connected, then what is the situation? That potential of this metal surface is, the surface of the conductor is KQ upon RB, and potential of this shell is at the surface KQ upon RA. Simple. Now you can compare them and you can find that potential of B is actually greater than potential of A. Why? Because RB is less than RA. So when we joined them, obviously the charge will flow from the higher potential point to lower potential point. So let us say that charge from this sphere, small q charge flows from this sphere to this sphere. And if charge q flows, then the new charges are q minus q and here q plus q, right? Now they are asking you the final charges. So what is the key point of our discussion? The key point of our solution will be that charges will flow till potential of the two spheres is not same. So this is something which we have to highlight, that the charges will flow till potential of both the conductors is not same. So alright, let me write new potential of both the conductors, and new potential of solid conductor is K new charge upon RB, and the new potential of hollow sphere is K new charge upon RA.
Now we have to solve it. If we solve it, if we try to simplify it, then you can see that q minus q upon q plus q will be equal to RB upon RA, right? So children, we have to look at the options given first, then only we will understand what is the logic behind every question, logic behind every part. We are having first option that E inside the conductor A should be 0. Then second option is that charge at A should be greater than charge at B. The third option is that surface charge density at A is upon surface charge density at B should be equal to RB upon RA. And the fourth option is that electric field on the surface of A should be less than electric field on the surface of B. And with whole analysis we have to check that whether all four or any one or any two or any three of these options are correct, because this is multiple correct option question. So once we got this analysis that charge q minus q, and this is the charge at A and this is the charge at B, new charge, and they are saying that charge at A upon charge at B is equal to radius of B upon radius of A, but we know that radius of B is less than radius of A. So that means that charge at, if RB is less than RA, then obviously the charge at A will be, just correct it, it is charge at B and this is charge at A. So if RB is less than RA, which is the case here, then charge at B will be less than charge at A. So the option B is correct, which is charge at B is less than charge at A. So option B is correct. And option A is automatically correct because they are saying charge electric field inside A is 0. Yes, it is 0 because inside the shell there is no charge. So whatever is the potential at the surface of the shell will be potential at every point inside the shell. So this option is also correct, option A is also correct, option B is also correct. After that, the third option, if you remember, was about the surface charge density. So let me analyze the surface charge densities. Surface charge density at A will be new charge at A upon 4 pi RA square, and surface charge density of B will be new charge at B upon 4 pi RB square. Divide them. If you divide them, then you will be left with charge at A upon charge at B and RB square upon RA square. Now simplify it because we are already having a relation here that QB into RA is equal to QA into RB. So using this relation we can compare the two surface charge densities. Use this QA into RB. Write in place of it QA into RB, write in place of it QB into RA, and that will get cancelled. QA into RB, write in place of it QB into RA. One RB will remain here, and similarly QB into RA and one RA will remain here. So these two will get cancelled and you will be left with RB upon RA, and that was the option C given. So option C is also correct. And then they have given an option about the electric field at the surface of A and electric field at the surface of B. So let me write electric field at the surface of A will be charge at A upon 4 pi epsilon naught RA square. The same way KQ at B upon 4 pi
KQ at B upon RB square. This is the electric field at the surface of the conducting sphere. Now 4 pi epsilon will get cancelled and you will be left with this formula. Instead of 4 pi epsilon naught, we don't have to cancel it. Actually, we have to get the surface charge densities. So take 4 pi and r square together. So what will be your result? You will have Q upon area of A as sigma A, Q upon area of B as sigma B, and epsilon naught will be there. So even E at A upon E at B will be sigma A upon sigma B. But sigma A upon sigma B, we know that sigma A upon sigma B, the result is RB upon RA. So substitute this value here. In place of sigma A upon sigma B, you substitute the value RB upon RA, and we know that RB is less than RA. Therefore, EA will be less than EB. And this was the option D, so option D is also true. So in this question, all the 4 options are correct. Now beta, before proceeding to the next question, there is a very important concept, earthing of conductor, which we will use in current electricity also, in capacitor also. So let me understand it once clearly, that when a conductor is connected to the earth, and earth is taken as a very huge conductor, right? So what happens, that whole charge flows through the wire to the earth, keeping both the potentials 0. Potential of earth is always taken to be 0, and any object which is connected with the earth will have potential 0. So potential of earth is taken to be 0 because it is a huge conductor and it has infinite capacity to store, to take the charge or to give the charge. So that is why whatever object is connected with this earth huge conductor, that will come to the 0 potential and the whole charge will float through to the earth. But this we can observe through the mathematics also. Take the example where the charge Q is given to this conductor and radius of this conductor is R. And we know that earth's radius is taken to be RE. Now if the two conductors are connected, if we take that let small q charge only flows through the conductor to the earth, only small q, then we know that new charge on this will be capital Q minus Q, and new charge on this will be small q, which came through this wire to earth. But the charge flows till the both potentials are not equal. So here also we are having the key point of the solution, that potential of the two is same. So potential of this conductor is K Q minus Q upon R. Potential of earth will be K, the charge flown from the conductor Q upon RE. If you simplify it and find the charge flown, then you will have this expression. And in this expression you can see that radius of the conductor is much smaller than radius of the earth. So actually the denominator can be taken approximately equal to radius of earth, and therefore the RE will get cancelled and the small q will come to be equal to the whole charge of this conductor. So mathematically also we can understand that whole charge flows from the conductor to the earth when they are connected. Now this is again very conceptual question. The question is from JEE 2007, and the question is that a neutral conducting sphere is placed near a positive charge and the charge is outside the spherical conductor. They are asking what will be the net charge on the sphere. Net charge on the sphere.
So let we analyze both the points, one which is asked and one which is behind the scene, and we need to know it. The first point about this situation is beta that charge will be induced on the outer surface only. If you remember the previous lectures, conductor with cavity, this is a beautiful concept. अगर तुम्हें समझ आ गया है तो तुमको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट हमेशा करने में मज़ा आएगा कि चार्ज हमेशा ये चार्ज सिर्फ बाहर वाली सरफेस पर ही अपीयर होगा, अंदर वाली सरफेस पे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अंदर वाली सरफेस पर अपीयर हो गया तो गॉसियन सरफेस जो हम इस कंडक्टिंग मटेरियल में ड्रॉ करेंगे उसमें चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रह ही नहीं सकती, ये सेटिस्फाई नहीं होगी कंडीशन। तो इसलिए पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने क्या बात करी थी कि बाहर के चार्ज का कैविटी के अंदर कोई रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी चेंजेस आएंगे वो बाहर की सरफेस पर आएंगे, इंड्यूस्ड चार्ज सिर्फ बाहर की सरफेस पर अपीयर होंगे, वो भी इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल विल रिमेन ज़ीरो। अब सवाल उठता है कि नेट चार्ज ऑन द सरफेस, तो नेट चार्ज ऑन द सरफेस विल बी ज़ीरो। दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग। नेट चार्ज तो, इंड्यूस चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो नॉन यूनिफॉर्मली इस तरफ हो जाएगा उसकी वजह से चार्ज अपीयर होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे। तो नेट चार्ज ऑन द स्फीयर विल बी ज़ीरो although the outer surface is having induced negative charge. Now come to this question. This is something which is frequently asked. You are having 3 shells. The first shell is given charge Q, radius R. The second shell is connected to earth, and the third shell is given charge 4Q and radius 4R. And I have taken a charge minus Q at the center also. And what is the question? Question is find charge on the surface of shell 2. The first point which you need to remember is that in the questions of shell, you don't have to consider the induced charges. You can write electric field and potential directly without considering the induced charges. So here they are asking what is charge on the shell number 2. So what is the fact which we know for the shell number 2? And that fact is that shell number 2 has potential equal to 0 because it is earthed. So let me write potential for shell number 2 and place it equal to 0. So अब तो तुम लोगों को सिखा दिया है, फटाफट पोटेंशियल लिखना शुरू करो। नंबर 1, 2 पर पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से होगा, क्यू की वजह से होगा। इस पर जो चार्ज है हमें पता नहीं है, तो हम मान लें कि इस पर चार्ज है स्मॉल क्यू, लेट, तो इसकी वजह से होगा और 4Q की वजह से होगा। ठीक है, अब एक एक करके ध्यान से कॉन्सेप्ट को और प्रिंसिपल्स को, रूल्स को अप्लाई करते हैं। माइनस क्यू सेंटर पर है, उसके लिए ये सरफेस कितनी दूरी पर है? 2R। तो माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो K माइनस क्यू अपॉन 2R। चार्ज हमेशा पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी में विद साइन रखा जाएगा। तो ये तो हो गया माइनस क्यू की वजह से। अब प्लस क्यू की वजह से देखो, प्लस क्यू की वजह से भी इस शेल का कोई भी पॉइंट, शेल नंबर 2 का कोई भी पॉइंट एक आउटसाइड पॉइंट है, यानी कि इसका पूरा चार्ज हम सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे और उससे 2R डिस्टेंस पर जो भी पोटेंशियल है लिख लेंगे, तो KQ अपॉन 2R। अब आ जाओ इसका अपना चार्ज। अपने चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? सारा चार्ज सेंटर पे मान के 2R डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिख लेंगे। तो चलो लिख लेते हैं KQ अपॉन 2R।
अब थोड़ा सा सावधानी, 4q की वजह से इस पर पोटेंशियल वही होगा जो 4q की सरफेस पर है। बहुत बात कर चुके हैं हम इसके बारे में कि 4q की वजह से इस जोन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इसलिए 4q की सरफेस पे जो भी पोटेंशियल है वो सारा पोटेंशियल इस जोन के हर पॉइंट पर होगा ही होगा, क्योंकि इसकी वजह से ये कांस्टेंट पोटेंशियल जोन होगा। इनकी प्रेजेंस की वजह से ये कांस्टेंट पोटेंशियल जोन रह नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं होते तो 4q की वजह से ये कांस्टेंट पोटेंशियल जोन होता। तो पोटेंशियल ड्यू टू 4q विल बी वॉट एवर इज पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ 4q, दैट इज k 4q अपॉन इसकी रेडियस है 4r। सॉल्व करके 0 रख दिया पोटेंशियल एट 2 को, तो जो चार्ज आ गया वो आ गया ट्वाइस q। ईजी था बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एक बार फिर से वीडियो को वापस से चला कर देखना और उसके बाद अपने आप को बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर समझाना कि कैसे इसे हमने लॉजिक लगाकर सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी, दैट वाज, and it is again frequently asked question in competitions, that find charge densities on each surface। तो स्टार्ट करते हैं। अब ईच सरफेस का मतलब इनर सरफेस भी और आउटर सरफेस भी। तो यहाँ पे तुम्हें ई और वी नहीं लिखना है, यहाँ पर वो पूछ ही रहे हैं कि इनर और आउटर सरफेस पे चार्जेस क्या हैं। तो जब वो पूछ रहे हैं तब तो हमको इनर और आउटर सरफेस के चार्जेस को देखना पड़ेगा, लेकिन जब हम ई और वी लिखते हैं तो जो भी इंड्यूस चार्जेस का होता है वो ई और वी के एक्सप्रेशन में कैंसिल हो जाता है और फाइनली हमको उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलो, ये बहुत आसान है, शुरू करते हैं। यहाँ पर है चार्ज Q। अगर इस पर चार्ज Q है और आप चाहते हो कि जो ये कंडक्टिंग मटेरियल है, सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड शेल, if you know that the electric field inside the material, the thin material of 2, electric field will be 0 there। तो इसमें पक्का है कि अगर इस जगह से तुम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो तो अंदर इनक्लोज चार्ज 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्लस Q है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गॉसियन सरफेस हम इस थिन शेल के मटेरियल में खींचेंगे, उस गॉसियन सरफेस के अंदर Q के साथ माइनस Q भी इनक्लोज होगा, तभी नेचर का रूल कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रह सकती वो फुलफिल होगा। और दूसरी तरह से कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज Q है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इनर सरफेस पर अपीयर हो जाएंगे। तो यहाँ Q है तो इनर सरफेस पर माइनस Q। अब इनर सरफेस पे अगर माइनस Q है तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर सरफेस से अंदर आए उनकी वजह से ही तो माइनस Q आया, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पीछे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ गए इक्वल, तो -2Q तो पहले से था और अब ये -Q यहाँ अपीयर हुआ तो पीछे क्या छोड़ गए, +Q। तो इन दोनों की वजह से जो नेट चार्ज आउटर सरफेस पे रहा वो नेट चार्ज सेकंड वाले में आउटर सरफेस पर सिर्फ -Q रहा। इसके बाद सेम लॉजिक यूज़ करेंगे कि अगर ये -Q है तो अंदर की सरफेस पर +Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अंदर +Q है यानी इलेक्ट्रॉन इस -Q की वजह से बाहर भाग गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन भाग गए, -Q के बराबर। और इस सरफेस पर ऑलरेडी 4Q चार्ज था, तो नेट चार्ज इस सरफेस पर कितना बचा, 3Q चार्ज। तो अब अगर पूछा जाए कि कितना है हर सरफेस पर चार्ज, तो इसकी इनर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ चार्ज आ गया तो इस कंडक्टिंग मटेरियल के गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने पर अंदर इनक्लोज चार्ज आ जाएगा और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फील्ड नहीं हो सकती। तो इनर सरफेस पे 0 बाहर Q,
इनर सरफेस पे -q, बाहर -q, इनर सरफेस पे q, बाहर 3q। बहुत सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर तुम्हें थोड़ा भी कन्फ्यूज़न लगा हो तो मैंने रीजंस भी प्रॉपरली लिखे हैं। डायग्राम नोट करो, रीजंस नोट कर लो, क्योंकि अगर तुमने अभी क्लियर नहीं किया तो जब पढ़ोगे तो रिवाइज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इधर देखो, सारे रीजंस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नोटेड है। नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। आप करोगे तो इनका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चंस नोट कर लो। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है जेई में, एंड दिस क्वेश्चन इन 2019 जेई। This question also in 2019 JEE. And this question in NEET 2019. जो भी क्वेश्चन मेरे को किसी प्रीवियस ईयर में आए हुए मिल रहे हैं, मैं उनको प्रायोरिटी देकर डिस्कशन में शामिल कर रही हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो करने के बाद इनका सॉल्यूशन भी नोट करेंगे। और अगला क्लास में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और गॉस लॉ के बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी दे रही हूँ। तो वो वीडियो बिल्कुल अलग होगा और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2021 टॉपिक वाइज इस प्लेलिस्ट में स्टोर करूँगी। तो जब कभी भी आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर करोगे, you have to go through those questions, because in last 3-4 years more than 90% questions which I guess in half yearly and pre-board, they appear in the question paper. But since students don't trust me and they think that they better know how to prepare, they don't go by my instructions, and finally their result is not as I expect from them. So now I am giving you the online YouTube, the questions will remain stored in YouTube, and anybody preparing for ISC can go through those questions, can prepare. You have to prepare all the questions. That is not that you just have to prepare those questions only, but those are expected questions, important questions, just looking at the pattern of the previous 10-year paper. So if you are preparing, then you have to put all those questions on priority. That just ensure that no question from that question bank is left, and rest, of course, if you want 100 out of 100, even you can do it. That 100 out of 100 can be achieved when you are leaving not a single point of your preparation. And I in the previous video told you that if you got better and very good percentage in your boards, then so many opportunities are opened for you.